अच्छा जी, we have started uh, coupling reactions. कपलिंग रिएक्शंस हमने कल शुरू किए थे, तो जिसमें क्या होता है कि टू फ्रैगमेंट्स जो हैं दे आर joined together with the aid of a metal catalyst. ठीक है, हमने इसमें कहा था कि कपलिंग रिएक्शंस आर ऑफ मेनी टाइप्स, जिसमें क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा स्टडी किए गए हैं. सो वी विल बी गोइंग टू cross coupling. Then the types of coupling reactions, we talked about this as well, that uh, in these types, heterocouplings in which two different partners are joined together, like in Hack coupling, Suzuki coupling, Sunigashira coupling. ये सारे ऐसे coupling reaction है जिसमें दो different moieties जो हैं वो आपस में ऐड होते हैं. एग्जाम्पल नीचे रिएक्शन में दिया गया है. आर एक्स प्लस alkene. This will be joined together by the presence of the palladium catalyst. Then the homocoupling, जिसमें दो similar partners जो हैं are joined together in the presence of the catalyst, like Wurtz reaction, Pinocchio coupling, Glasser coupling. ये सारे जो है homocoupling reactions हैं. So we will start Hack coupling. Hack coupling, Hack reaction इसको कहा जाता है. The Hack reaction, it is also called Mizoraki Hack reaction, is the chemical reaction of an unsaturated halide or triplet. Triplet is trifluoromethane sulfonate with a alkene in the presence of a base and a palladium catalyst or palladium nanomaterial based catalyst to form a substituted alkene. इसमें बेसिकली हम जो है एक अल्काइल हैलाइड जो है उसको रिएक्ट करते हैं विद एन alkene in the presence of this palladium catalyst, in the presence of a base. इसमें बेस भी डाला जाता है. तो ये दो substituents species जो हैं they are combined together through this double bond. ठीक है, R डैश एक साइड पर और R अल्काइल ग्रुप दूसरी साइड पर चला जाता है. इसमें जो ये रोल प्ले करता है दैट इज द पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट is playing the role of joining together these two moieties. ठीक है, it is named after uh, Tsutomu Mizoraki and Richard F. Heck. ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे अलग अलग काम किया था, लेकिन दोनों का काम तकरीबन सिमिलर था. Heck was awarded the 2010 Nobel Prize in Chemistry, which he started with Iachi Nigishi, shared with Iachi Nigishi and Akira Suzuki for the discovery and development of this reaction. ठीक है, कपलिंग रिएक्शन, इन्होंने सब ने कपलिंग रिएक्शंस पे काम किए थे. ठीक है, इनको ये 2010 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया है इन रिएक्शंस के ऊपर. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रिएक्शंस हैं, पर्टिकुलरली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मेसीज जो हैं मेडिसिन जो हैं इन रिएक्शंस को यूज़ करते हैं. This reaction was the first example of a carbon-carbon bond forming reaction that followed a palladium 0 palladium 2 catalytic cycle. ठीक है, इसमें कार्बन इनिश हम इसको कहते हैं कार्बन एक्टिवेशन रिएक्शंस इनको कहा जाता है. सो दीज आर कार्बन एक्टिवेशन रिएक्शंस, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हैक ने मतलब डिस्कवर किए थे, तो इसलिए इसको इस पे नोबेल प्राइज मिला. Reaction mechanism में the mechanism involves an organopalladium intermediates. पैलेडियम जो है अक्सर हम एज अ साल्ट डालते हैं. ठीक है, लेकिन पैलेडियम जब आप डाल लेते हैं तो वो पैलेडियम फिर दिस इज पासिंग थ्रू सम फेजेस, और ये होमोजेनियस मीडियम है होता है. So this is passing through complex formation phases and produces the palladium 2 precursors as well. The palladium zero compound required in this cycle is generated in situ from a palladium 2 precursor. मैंने आपको बता दिया कि इसको हम एज ए साल्ट डालते हैं लाइक पैलेडियम एसीटेट. ठीक है, पैलेडियम एसीटेट या पैलेडियम क्लोराइड. सो पी डी सी एल टू
तो उसमें भी पैलेडियम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +2 है। तो ये फिर +2 से ज़ीरो में चला जाता है, फिर ज़ीरो से +2 में आता है। तो ये पूरी साइकिल में इस तरह घूमता रहता है। ये एक्चुअली दिस इज द पैलेडियम 2 redox chemistry which is playing the role of the catalysis, ठीक है। For instance, palladium 2 acetate is reduced by triphenylphosphine to bis triphenylphosphine palladium 0। इसमें ट्राइफिनाइलफॉस्फीन आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये दूसरी रिएक्शन में भी रोडियम कैटालिसिस में भी आपने देखा था कि ट्राइफिनाइलफॉस्फीन जो था उसमें दो एज अ लिगेंड काम कर रहे थे और एक जो था वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा था। खुद जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल को दे रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर भी यही काम चल रहा है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है। इसमें भी यही काम होता है और पैलेडियम 0 में कन्वर्ट कर देता है, पैलेडियम को 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज शोन ओवर हियर। ये फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसमें पैलेडियम इज प्रेजेंट इन 0 स्टेट, ठीक है। इसके साथ दो लिगेंड्स अटैच्ड है। अब ये दो लिगेंड्स जो हैं ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी हो सकते हैं, कोई और भी जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप ये भी हम जनरेट करते हैं, इस तरह नहीं होता कि ये पहले इसको जनरेट किया जाता है फिर उसके बाद जो है ये कैटालिटिक साइकिल का हिस्सा बनता है। वो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से बनता है। सो दिस इज पैलेडियम 0। पहले जो है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दिस इज रिएक्टेड विद द पैलेडियम 0 to produce the square planar intermediate complex in which palladium is present in 0 oxidation state, sorry +2, ये +2 में चला जाता है। सो और एक साइड पे ब्रोमीन अटैच होता है और एक साइड पे एराइल ग्रुप अटैच होता है। फिर जो है pi complexation occurs when you add the some alkene, this is methyl acrylate, इसको हम डालते हैं। सो दिस इज प्रोड्यूसिंग पाई कम्प्लेक्स विद द palladium center to produce this new type of the intermediate complex, जिसमें palladium जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। देन द hydrogen migration reactions occur and then you are having this new type of intermediate, जिसमें ये जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके इसके साथ बन जाता है and then there is a shift of the bond over here to produce this new type of the bond. There hydrogen migration occurs and then you are having this double bond formation again और ये बॉन्ड टूट के फिर से पाई बॉन्ड बना देता है। सो दिस स्टेप, this fifth step and third step are similar, लेकिन थर्ड स्टेप में और फिफ्थ स्टेप में सिर्फ ये फर्क है कि ये पाई कम्प्लेक्स जो है ये रिएक्टेंट से बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट के साथ पाई कम्प्लेक्सेशन हो रही है। फिफ्थ स्टेप में जो है पाई कम्प्लेक्सेशन हो रही है लेकिन वो हम प्रोडक्ट के साथ बन रहे हैं। देन अगेन the original complex is resumed with H and B are present over here and the अब ये जो स्टेप है ये जो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो होता है ये हम एज अ बेस के तौर पे इसमें बेस डाला जाता है तब ये स्टेप फॉलो होता है और प्रोडक्ट जो है वो आइसोलेटेड हो जाता है। तो आपने देख लिया कि हमने एराइल ब्रोमाइड और ये जो रिएक्टेंट है इन दोनों को आपस में मिलाया है और इससे आपको ये न्यू प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड के एक साइड पे एराइल ग्रुप है और दूसरे साइड पे ये जो आपका दूसरा रिएक्टेंट है ये है। और फिर इस स्टेप के बाद हम जब बेस डाल देते हैं सो दिस कम्प्लेक्स इज रीजनरेटेड एंड producing again this original complex with the release of the HBr.
Now steps in mechanism, step A is an oxidative addition reaction. अब देखिए स्टेप ए जो है ये स्टेप ए है, ये इस साइड पे स्टेप ए है. सो दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं. In which palladium inserts itself in the aryl to provide bond. Palladium then forms a pi complex with alkene 3, and in step B the alkene inserts itself in the palladium carbon bond in a syn addition step. ये जो बी स्टेप है ये पूरा का पूरा इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन इंसर्शन रिएक्शन जिसमें होता है और पाई कॉम्प्लेक्सेशन होता है. Then follows a torsional strain leaving rotational to the trans isomer not shown, and step C is a beta hydride elimination. Step C जो है this is step C, this is beta hydride elimination reaction. So ये आपको फिर से pi complexation produce कर देता है. Herein the arrows are showing the opposite step with the formation of a new palladium alkene pi complex 5. This complex is destroyed in the next step. The palladium 0 compound is regenerated by reductive elimination of the palladium 2 compound by potassium carbonate in the final step. जब आप इसमें बेस डालते हैं पोटेशियम कार्बोनेट इसमें एक बेस है. सो दिस इज ये जो पैलेडियम है ये पैलेडियम कन्वर्ट होता है पैलेडियम 0 और +2 से +2 से 0 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए. So this is the conversion of +2 oxidation state to 0 oxidation state is done by the addition of a base, which is in this case potassium carbonate A2CO3. ठीक है. So this is the whole mechanism of the egg coupling जिसमें a combination of reactions होते हैं oxidative addition, pi complexation, hydrogen insertion, beta hydrogen elimination, then reductive elimination reactions. So you all these reactions are combined together to produce the Hack coupling reactions. Then the next very important reactions are Negishi coupling. ये भी इसी नोबेल प्राइज का हिस्सा थे. तो इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस. इसमें हम अल्काइल और एराइल हैलाइड को वही ट्रीटमेंट है, इसको हम ट्रीट करते हैं. इधर हम उसकी जगह क्या यूज करते हैं, जिंक का एक रिएजेंट यूज करते हैं. दिस जिंक रिएजेंट, जिंक हैलाइड रिएजेंट, जिंक अल्काइल हैलाइड रिएजेंट जो है ये रोल प्ले करता है टू प्रोड्यूस द कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. ये एक्चुअली कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शंस पे इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है. तो इसमें आर एक्स, दिस इज रिएक्टिंग विद आर डैश जिंक एक्स to produce RR moiety in the presence of a catalyst. अब इधर भी वही कैटलिस्ट है जो हैक कपलिंग में था, इधर भी पैलेडियम 0 कैटलिस्ट यूज होता है. सो पैलेडियम 0 अगर कैटालिटिक साइकिल को देखें, पैलेडियम 0 दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. इसमें होता है पैलेडियम 2 में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें R ग्रुप एक साइड पे और X ग्रुप दूसरे साइड पे. व्हेन यू ऐड R, Z and X in the next step, so this is converted to R, X, zinc, X. reagent इससे बन जाता है, ये X इससे हट जाता है और एक इसका अपना X इसके साथ लगा हुआ है, मतलब हैलाइड ग्रुप्स जो है. और इधर पैलेडियम की दूसरे साइड पे R अटैच हो जाता है. So in the next step reductive elimination occurs और R species जो है ये isolated हो जाती है, regenerating the catalyst which is again taking part in the catalytic cycle to produce the product. Negishi coupling और हैक कपलिंग में सिर्फ फर्क ये है कि इसमें अल्केन्स या जो भी मोइटी आप रिएक्ट करते हैं तो वही प्रोड्यूस होते हैं. उसमें ये होता है कि उसमें एक डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब addition products produced on it. So these are all carbon-carbon bond formation reactions. Then the next coupling is Suzuki coupling. Suzuki coupling इसमें भी वही कार्बन-कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ऑफ रिएजेंट्स हैं.
like see this is the boron derivative. सो आप ये बोरान का डेरिवेटिव पहले बनाएंगे किसी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो आप रिएक्ट करना चाहते हो, जिसके ऊपर जिस कार्बन के ऊपर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन करना चाहते हैं. सो यू हैव टू ट्रीट इट with boron reagents to produce this boron derivative. Then this boron derivative is reacted with aryl halide to produce the carbon-carbon bond around this around this center. Okay, so this boron boron derivative is reacting with the aryl halide to produce this new product in which the carbon-carbon bond formation occurs. इसमें भी वही बेस यूज होता है और पैलेडियम का जीरो वैलेंट कम्प्लेक्स यूज होता है. ठीक है, सो पैलेडियम जीरो कैटालिटिक साइकिल को अगर आप देखें, सो पैलेडियम जीरो ArX, this is aryl halide. So oxidative addition occurs aryl group एक साइड पे और X दूसरे साइड पे, और पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में कन्वर्ट हो जाता है. जब आप NaOH या K2CO3 जो भी आपने बेस डाला है, सो व्हेन यू एड इट, NaOH जब आपने डाल दिया तो ये NaX को निकाल लेता है और OH इधर अटैच होता है. सो ArPD2OH एक न्यू स्पीशी बन जाती है. देन इन द नेक्स्ट स्टेप, जो जो बोरान का डेरिवेटिव आपने बनाया हुआ है, दिस इज reacted with NaOH to produce this new type of the product, which is then reacted with this um, intermediate species produced in the catalytic cycle of the Suzuki coupling. So जब आप इसको ट्रीट करते हैं, so ये AR डैश इसकी दूसरे साइड पे चला जाता है और रिलीजिंग दिस OH ग्रुप, और इधर BOH होल 4 माइनस चार्ज इस पे आ जाता है. ठीक है, ये भी स्पीशीज निकल जाती है. Then the reductive elimination occurs to produce palladium zero, along with the release of carbon-carbon bond form species. ठीक है, न्यू स्पीशीज जो आपके पास बन जाती है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन occurs and producing a new type of the product. ठीक है, so this is इन तीनों रिएक्शन में अगर आपने देखा होगा तो तीनों में से डिफरेंस जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल्स का. ठीक है, उसमें हैक में स्टार्टिंग मटेरियल्स जो हैं वो सिंपल से हैं, मतलब उसमें आपने एल्कीन यूज़ की है और एराइल हैलाइड. दूसरे में आपने जिंक का डेरिवेटिव यूज़ किया है और अल्काइल और एराइल हैलाइड. इसमें भी अल्काइल और एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद बोरान बोरो derivative of the aromatic compounds are alkyl compounds. सारे रिएक्शंस जो हैं अपनी अपनी जगह यूज होते हैं. कोई रिएक्शन एक जगह पे एक्टिव होता है, कोई रिएक्शन दूसरी जगह पे एक्टिव होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो कपलिंग रिएक्शंस है, दैट इज सुनुगिशिरा कपलिंग. सुनुगिशिरा कपलिंग, और ये जो है इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड के एक साइड पे और दूसरे साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. ये हैक कपलिंग की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि इधर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, और बाकी स्टेप्स वही हैं जैसे आप देख रहे हैं. इसमें इस स्टेप से यू शुरू होता है पैलेडियम जीरो, फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन अकर्स ArX है. सो AR इधर और X दूसरे साइड पे और पैलेडियम +2 में कन्वर्ट हो गया. Then in the next step, you are treating this, this is alkylite copper derivative. ठीक है, तो ये जो alkylite copper derivative इसको हम इसके साथ ट्रीट करके ये जो न्यू स्पीशी बनती है जिसमें अल्काइन जो डेरिवेटिव है ये पैलेडियम के साथ रिएक्शन करता है. ये जो स्पीशी है ये अल्काइलाइट कॉपर डेरिवेटिव जो है ये हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ this CuX and alkyne with the R3 tertiary amines. ठीक है,
तो ये आप जब ये तीनों स्पीशीज आपस में रिएक्शन कर देते तो इससे Cu अल्काइलाइट डेरिवेटिव बन जाता है along with the release of R3NHX salt। ठीक है, ये फिर ये जो स्पीशी है ये फिर इसके साथ रिएक्शन कर देती है और फिर से CuX बनता है, फिर वो कैटालिटिक साइकिल का हिस्सा बनता है एंड देन प्रोड्यूसिंग दिस अल्काइलाइट कॉपर डेरिवेटिव। और ये कॉपर अल्काइलाइट कम्प्लेक्स एंड पैलेडियम का ये जो ऑक्सीडेटिव एडेड प्रोडक्ट है, ये आपस में रिएक्शन जो करते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन। So after transmetallation reaction, you are producing this new type of the intermediate species, जिसमें alkyne group जो है एक साइड पे और aryl group दूसरी साइड पे। Then the reductive elimination occurs to produce the product with the regeneration of the original catalyst, और फिर again this catalyst is taking part in the catalytic cycle to produce the product। ये चार पांच रिएक्शंस जो हैं ये बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं और सिमिलर रिएक्शंस हैं। सिर्फ फर्क इनमें जो डेरिवेटिव जो सबस्ट्रेट होते हैं वो उनका है, बाकी इनमें कैटलिस्ट भी तकरीबन सिमिलर यूज होते हैं। मतलब वही पैलेडियम ज़ीरो, पैलेडियम टू, पैलेडियम ज़ीरो, पैलेडियम टू, इसके थ्रू साइकिल में चलते रहते हैं और फिर आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहेंगे। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये काफ़ी है। वी विल स्टॉप ओवर हियर। और